डिस्प्ले So hello everybody, good morning and welcome to the EduphoreIAS, the Hindu analysis series, and today, as you know, the date is 21st of July. So we are starting with the Hindu analysis. Let us first, सबसे पहले हम देखते हैं फ्रंट पेज, जैसे कि हम हमेशा इस तरह से चलते हैं. So पेज वाइज हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है. ठीक है. सो इवन अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की न्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्या हमें पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता. स्पेशली जब पेज वाइज भी आप चीज़ें ध्यान रख सकते हो. ठीक है. तो चलो फर्स्ट जो मेन आप देख रहे हो इस पेज पे, इज द डेप्यूटी डिस्टर्ब ऑर्डर्स सेंटर मणिपुर गवर्नमेंट टू एक्ट. जैसा कि आपको पता होगा सेक्सुअल असॉल्ट के कुछ वीडियो वायरल हुए थे. ठीक है. तो उससे रिलेटेड ये केस है एंड टेकिंग सू मोटो होता है बाय इट्स ओन. ठीक है. अपने आप cognizance of sexual assault video court issues ultimatum to governments to bring perpetrators to book or step aside for it to take action. ठीक है. So सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही स्ट्रांगली वर्ड में, स्पेशली सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ी स्ट्रांग वर्ड में देखो दोनों ही गवर्नमेंट्स को, मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि एक्ट करो अदरवाइज हम एक्ट करेंगे. ठीक है. तो दिस इज व्हाट Supreme Court has said, using women as instruments of perpetrating violence in a charged atmosphere is simply unacceptable in a constitutional democracy. This is what is said by Honorable CJI, Supreme Court. Said. ठीक है. So कहते हैं कि women को as an instrument use करना for perpetrating violence in a charged atmosphere, because atmosphere charged है because पिछले 2-3 महीनों से अगर आप मणिपुर में देखो तो मणिपुर न्यूज है because of ethnic conflict going on between Kuki and Meiteis. ठीक है. We direct both the center and the Manipur governments to take immediate steps and to apprise the court of the action taken before the next date of testing. So कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरेक्ट करते हैं हम सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड स्टेट गवर्नमेंट को कि इमीडिएटली स्टेप ले एंड जो भी स्टेप ले रही है उससे हमें अवगत कराए. ठीक है. Before the next date of hearing. So this is the news. Prime Minister ने क्या कहा कि law will act with full might on guilty. So Prime Minister ने भी बोला है इसके ऊपर 4 held in Manipur sexual assault case. So already 4 जो perpetrators हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. ठीक है. related to this sexual violence case. चलो अब हम लेफ्ट साइड देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है आज के लिए. So first is 9 letters का, this is not that important. What is important? This one discussing delimitation and its fallout. States continue to remain frozen as per 1971 census. ठीक है. तो 2026 तक इसको फ्रीज कर दिएगा कि सीट्स को जो भी 1971 की हमारी पॉपुलेशन थी, सेंसस डेटा था उसके बेसिस पे. ठीक है. सो इस पे हम क्वेश्चन से फॉर्मेट में देखेंगे कि इवन कि one of the former chief election commissioners of India will be answering the questions. We'll see that what he thinks on this matter. ठीक है. Obviously, with the changing trend and now today we know that we have become the world's most populated country. So इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है, तो चेंजिंग जो डायनेमिक्स है उसको ध्यान में रखते हुए हम ये जरूरी हो जाता है कि जो लोकसभा जो पार्लियामेंट की सीट्स है उसको भी रिवाइज किया जाए ओवर द टाइम. ठीक है. तो उस पर हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, इसके बारे में हमने कल परसों भी देखा था. परसों कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टू टेक अप दिल्ली गवर्नमेंट चैलेंज टू सेंटर्स ऑर्डिनेंस ऑन सर्विसेज. सो आपको पता है जैसे कि काफी टाइम से हम डिस्कस करें इस चीज को कि सेंटर एंड जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है काफी टाइम से रिलेटेड टू द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इसके लिए सीजे ने कहा था कि वी आर थिंकिंग टू कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड फाइनली कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वी आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो इस पूरे मैटर को देखेगा. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मींस मैंने बताया था कि कम से कम 5 जजेस होंगे. ठीक है. 5 और मोर देन 5.
अब इस पे क्या जजमेंट आता है फाइनली निकल के, उस पर हम डिस्कस करेंगे, उस पर हम क्या करेंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसा कि ये एडिशन अगर आप देखोगे न्यूज़पेपर का, तो 2 रीजनल मोहाली है, बट मेनली इट कवर्स दिल्ली एज वेल, रिटन हियर एज वेल दिल्ली। सो ऑफ कोर्स जो लोग दिल्ली से हैं वो जरूर इस पेज पे ध्यान देंगे, अदरवाइज बिकॉज हम जहाँ भी रहते हैं हमें लोकल एरियाज में कुछ पता होना चाहिए क्या चल रहा है। एटलीस्ट अवेयरनेस दिस माइट नॉट बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक अवेयर सिटीजन होना भी जरूरी है। तो इस पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है इन योर सराउंडिंग्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज मोस्टली जो है वो पॉलिटिक्स रिलेटेड होता है, स्टेट से रिलेटेड। सो इसको हम अननेसेसरी कोई खास इंपॉर्टेंट चीज ना हो, मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉलिटिक्स ही आपको इस पेज पे मिलेगा, तो इसलिए हम इस पेज को सिर्फ स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो कंप्लीट पॉलिटिक्स ही आपको देखने को मिलेगा इस पे, इसलिए हम इस पेज पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे। ओके, उसके बाद है रेज Kachatipu island basically and Tamils issued during Sri Lankan president visit। सीएम जो तमिलनाडु के हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है प्राइम मिनिस्टर को कि जब श्रीलंकन प्रेसिडेंट इंडिया में विजिट कर रहे हैं आएंगे तो उनके जो भी डिस्कशन होगी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में, उसमें ये काचाटीपू आइलैंड जो है एंड तमिल इशू जो है, तमिल इशू मींस तमिल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको रेज करेंगे, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान रखेंगे हम। विजिट के बाद हम देखेंगे ऑब्वियसली कि इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशंस भी कैसे, क्या यहाँ फाइनल कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या फाइनल निकल के आता है उसमें से, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट नॉट मच एलिमेंट, फिर से इस पेज इज रिलेटेड टू स्टेट्स, तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है सच, ओके। चलो, सो इसके बाद जो नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज है दैट इज योर एडिटोरियल पेज। स्पॉटलाइट अगेन ये मोस्टली टॉकिंग अबाउट द Jyoti Devi family and also again politics only, not that important for us. Okay, not that important. Finally, we have landed on the editorial page, the most important page of a newspaper. So let us, as far as exam point is concerned, okay, exam point of view. So इस पे से जो first article है, that's not that much relevant, not that important. Second article जो है, that is important indeed. So इसको हम बात करेंगे, and that this article is related to basically the digital protection data bill. ठीक है, जो गवर्नमेंट हमारी जो डिजिटल प्राइवेसी है उसको सेफगार्ड करने के लिए बिल लेके आने वाली है, एंड इस बिल को जो ऑनगोइंग मॉनसून सेशन है व्हिच हैज स्टार्टेड एक्चुअली फ्रॉम यस्टरडे ऑन 20 जुलाई, सो उसमें गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली है। इसमें राइटर लिखते हैं सबसे पहले जीडीपीआर की बात करते हैं, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, दिस एक्ट ऑफ यू, बिकॉज यू जो है यूरोपियन यूनियन जो कि 27 नेशंस की ग्रुप है, सो फर्स्ट यू as a block is the first, you can say, this block which has, which brought this kind of privacy related bill or which finally made this act, ठीक है। So इस GDPR की काफी वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलैरिटी मिली इससे, because this was the first first step towards safeguarding the privacy of citizens, especially in the digital domain, ठीक है। So quickly हम इस आर्टिकल को देखते हैं। तो शशांक मोहन जी, प्रोग्राम मैनेजर द सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नेंस, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, एनएलयू। सो इंडिया इज नॉट यूरोप एंड दिस सीम्स स्पेशली ट्रू इन द फेस ऑफ अ टास्क सच एज ड्राफ्टिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ फॉर ओवर 1.4 बिलियन इंडियंस। सो ये कहते हैं कि इंडिया जो है यूरोप नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, यूरोप भी इंडिया नहीं है, ठीक है, वैसे वैसे इज इट ट्रू। सो इट्स अ टफ टास्क टू ड्राफ्ट अ लॉ, डेटा प्रोटेक्शन लॉ स्पेशली for 1.4 billion population. The European Union's data protection law, that is GDPR, General Data Protection Regulation, ठीक है, came into force in the middle of 2018 and achieved widespread popularity as arguably the most comprehensive data privacy law in the world.
ठीक है, पॉपुलैरिटी इसको मिली, बट लेटर ऑन क्या हुआ, अगर आज के टाइम में देखोगे तो there are lots of implementation challenges related to this law. However, the GDPR has been saddled with challenges of implementation and risk being relegated to the status of a paper tiger. ठीक है, सो आज इसकी जो सिचुएशन है उसको राइटर क्या कहते हैं कि जो ये मोस्ट पॉपुलर बिल जो है सेफगार्डिंग द प्राइवेसी ऑफ सिटीजंस इन डिजिटल डोमेन, बेसिकली इट्स जस्ट अ पीस ऑफ, और यू कैन से इट्स जस्ट अ पेपर टाइगर. ठीक है, although the huge challenges may be due to its unique legal structure, because you, of course, it's a confederation, let us say, is a grouping of 27 different countries. So of course it might, the different countries might not be, on same line, let us say, or on some same page with respect to this law. जरूरी नहीं कि सारी कंट्रीज ही इस चीज को माने, तो इसलिए अगेन एक लीगल स्ट्रक्चर और लीगल इशू जो है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इनके साथ है, बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज. ठीक है, तो सारे के सारे इश्यूज को एक फुटिंग पे लाना इट्स क्वाइट चैलेंजिंग. इंडिया मस्ट गार्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एनेक्टिंग अ लॉ दैट इज टूथलेस इन इफेक्ट. सो यू कहीं ना कहीं by giving the background of GDPR, which is currently terming as a tiger, let us say it's just a paper tiger. So इस पेपर टाइगर इंडिया का जो अपकमिंग जो इंट्रोड्यूस करने वाली गवर्नमेंट बिल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन, वो भी कहीं ऐसा ना हो जाए पेपर टाइगर पहन कर रह जाए ना टूथलेस इन्फेक्ट हो जाए, कोई उसकी रियल इम्पैक्ट ना हो. सो इसलिए ये वार्न भी कर रहे हैं, सजेशन भी दे रहे हैं कि इस तरह का ना हो. इसलिए जरूरी है कि हम कुछ चेंजेस करें. लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल द इश्यूज, बिकॉज़ गवर्नमेंट पहले भी दे रही है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करने वाली है, बट ओवर द टाइम गवर्नमेंट ने चेंजेस किया. Issues around data use. This deliberation becomes increasingly relevant as the Indian government is likely to table India's fresh data protection law in the ongoing monsoon session of Parliament, जो कि 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाला है. ठीक है, monsoon session, कि पॉलिटी में आप लोग पढ़ोगे कि मेजरली एक साल में जिस सेशन की बात कर रहे हैं 3 सेशंस होते हैं जनरली, monsoon session, budget session and winter session Parliament. So this is going on. Monsoon session, then after this of course we will be having first was budget session, then now this is the monsoon session, and the last would be in a year, let us say, what, winter session. Late last year the government released the digital DPDP bill, that is Digital Personal Data Protection Bill in 2022. So government एक bill लेके आई थी DPDP, Digital Protection, Digital Personal Data Protection Bill, that is just personal, talking about the personal data and not the non-personal data, in 2022 for public consultation. This is the third recent attempt at drafting a data protection law. ठीक है, जो upcoming session में bill introduce होगा, so this is the third attempt in this direction. While the draft released for public comments was not as comprehensive as its previous versions, news reports suggest that the government may present a bill that is largely similar. ठीक है, similar to the previous one, DPDP bill of 2022. Considering this, critical gaps remain in the DPDP bill that would affect its implementation and overall success. ठीक है, so कहते हैं कि सब कुछ ध्यान रखते हुए कि अगर हम बात करें तो critical gaps कुछ है DPDP bill में that would affect implementation. Fine, at the implementation stage उसका impact हमें देखने को मिल सकता है and overall success of this bill. Now, so what are these challenges or the critical gaps in this DPDP bill? So it's a scope and definition. The DPDP bill only protects personal data because data, it talks about digital personal data protection. Digital personal data protection, only personal, fine, and not the non-personal. So this is what he is referring to as the critical gaps. He is saying that it should also cover the non-personal data as well. Fine, that it should include both type of data, personal as well as non-personal. So personal data क्या होती है? Personal data is related to identification especially. Fine, any data that has a potential to directly or indirectly identify an individual. Fine. So in the modern data economy, entities use various types of data, not just personal data. ठीक है? Both personal and you can say the non-personal data. To target, profile, predict and monitor users. Non-personal data is typically anonymous data that does not relate to particular individual. For example, aggregate data on products which numerous users look at between 9 p.m. and 11 p.m. and so on. So non-personal data
टाइप का एनोनिमस डेटा है एंड इसमें एग्जांपल भी कोट करें कि सपोज अगर आप 9 PM से कोई भी यूजर 9 PM टू 11 PM नाइट में अगर कुछ सर्च करता है लेट अस से प्रोडक्ट ऑन Amazon, so aggregate data on products which numerous users look at between 9 PM and 11 PM on Amazon. Often this non-personal data when combined with other data sets can help identify individuals and in this way become personal data impacting user privacy. Because आप अगर ये सर्च करते हो तो कहीं ना कहीं एल्गोरिथम काम करता है बैक ऑफ द दिस टेक्नोलॉजी इन टेक्नोलॉजी जहाँ पे ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि हाँ दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ पर्सन्स wants this product at this particular time period or orders this product at a particular time period. So somewhere this non-personal data becomes the part of your personal identity over the time. ठीक है? So that's how even your privacy becomes or gets impacted. For instance, anonymous data sets about individual Uber rides in New Delhi can be combined with the prayer timings to identify members who belong to certain community. So another example is कि Uber की सपोज आप Uber टैक्सी बुक कर रहे हो इन न्यू दिल्ली, सो इसको कंबाइन किया जा सकता है प्रेयर टाइमिंग से कि कौन कितने बजे प्रेयर के लिए टेंपल जाता है, चर्च जाता है, मस्जिद जाता है, ठीक है. सो उसके इन दोनों को कंबाइन करके ये आइडिया लगाया जा सकता है, ये फाइनली कंक्लूजन हो सकता है कि द मेंबर्स बिलोंग टू व्हिच कम्युनिटी. ठीक है. सो वी सी हाउ द पर्सन अल्टीमेटली द नॉन पर्सनल डेटा ट्रांसलेटिंग इटसेल्फ इन पर्सनल, fine, or threatening your privacy ultimately, which could include their home address as well. This process of re-identification, because अगर आप घर से टैक्सी बुक कर रहे हो तो of course already आप घर का एड्रेस दे चुके हो ना. So this process of re-identification of non-personal data poses significant risk to privacy. Such risks were accounted for in the previous version of India's draft data protection bill in 2018. Fine. So this was India's draft data protection bill. So this was the first attempt. Second is DPDP bill, and third is attempt is now the government is going to introduce similar kind of bill in this ongoing monsoon session. So that's why this is the third attempt in this direction, but do not find a place in the latest draft. By not recognizing these risks, the DPDP bill is very limited in its scope and effect in providing meaningful privacy to Indians. So he is saying that as the name suggests, Digital Personal Data Protection Bill (DPDP). So therefore, by focusing on personal data only, somewhere it is overlooking or sidestepping the non-personal data that actually even becomes important, because this non-personal data ultimately with different types of algorithm and this identification is for example Amazon, this example, Uber rides example, then prayer timings or visiting temples and all, even all this non-personal data gets somewhere integrated with different data sets and finally results in this identifies the personal even this really identifies the personal data set as well or personal things as well. So of course somewhere this anonymous or non-personal data translating itself over time by certain algorithm based on these things, ठीक है, product ordering and visiting temple and all, Uber riding. So all this data when gets integrated, so somewhere results or threatens your privacy. ठीक है. So of course non-personal data को भी account में लेना चाहिए. This is what we can conclude from this discussion. A simple and effective solution is earlier versions would be to add a penal provision in the bill that provides for financial penalties on data processing entities for the re-identification of non-personal data into personal data. So एक simple solution ये देते हैं कि ये हो सकता है कि जो data processing entities हैं उन पे penalty लगाई जाए, heavy penalty लगाई जाए, so that they don't this allow re-identification of non-personal data into personal data. ठीक है. Limited reach of the data protection board. So there is a provision for board. Another gap. So the first gap, the second gap is the inability of the proposed data protection board to initiate a proceeding of its own accord. Under the bill, the board is the authority that is entrusted with enforcing the law. The board can only institute a proceeding for adjudication if someone affected makes a request, let us say, or complaint to it. Only means it cannot take suo motu in cases. ठीक है, अपने आप नहीं इनिशिएट कर सकते ये प्रोसेस को, और the government directs it to do so. So
सो आइदर कोई कंप्लेंट करे या गवर्नमेंट डायरेक्शन दे कि हाँ भाई फर्दर प्रोसीड करो रिलेटेड टू द केसेस और टेक इनटू अकाउंट द violation of privacy and all, but they don't this board doesn't have the power of suo motu. Not it cannot take or proceed with this taking the case by its own. Okay. Okay, so the only exception is when the board can take action on its own to enforce certain duties listed by the bill for users. So this is the exception. This is for the adjudication of disputes between the law and the users. For example, an obligation on users not to register a false or frivolous complaint with the board and not between users and data processing entities. So see, the onus of obligation lies more on the complainant or the user, and not this obligation is between users and the data processing entities. So again, this is a problematic thing. In the data economy, users have diminished control and limited knowledge of data transfers and exchanges. बिल्कुल ठीक बात है, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, प्लस जो यूजर्स की है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है ओवर द टाइम कम होती जाती है डेटास पे. Due to the ever evolving and complex nature of data processing, users will always be a step behind entities which make use of their data. ठीक बात है, मेटा और फेसबुक से हम पीछे ही रहेंगे. For example, a food delivery app can take all my data and sell it to data brokers in violation of my contractual relationship with them. Individually, I may have little resources or incentive to approach the data protection board. ठीक है, अगर प्राइवेसी वायलेशन होती है तो हो सकता है कि मेरे पास उतने रिसोर्सेज ना हो या मैं किसी भी वजह से डेटा प्रोटेक्शन जो बोर्ड है उसको अप्रोच ना कर पाऊँ. Fine. The board on the other hand may be in a better position to proceed against the food delivery app on its own, means by taking the suo motu on behalf of all such affected users. This is not a novel suggestion. The Competition Commission of India, which is responsible for the enforcement of India's antitrust laws, has the power to initiate inquiries on its own. So जो Competition Commission of India है, उसके पास suo motu power है, but it can take the this action on its own. Again, a simple way to do this would be to have a provision in the DPDP bill that allows the data protection board to initiate complaints on its own, means giving it the power of proceeding with the suo motu authority. ठीक है, कि अपने आप ही केसेस को इनिशिएट कर सके. These are not the only gaps in the DPDP bill, but finding solution to them would help address challenges in the implementation in a significant way and make for a more future-proof legislation. ठीक है, so this is what this article is all about. Though small one, but important one, because government is going to introduce the bill, so we must be aware of the shortcomings or loopholes or the gaps related to the privacy in the upcoming or the previous bill, because upcoming bill would be more or less based on this only. Okay. Next is the delimitation question settled? This was the question I was talking about. So see, O.P. Rawat ji, former IAS officer, served as 22nd Chief Election Commissioner of India, and Uday Shankar Mishra is a professor at the International Institute for Population Sciences, Mumbai. ठीक है, so दो लोग हैं, दो लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को related to delimitation या related to the freezing of the seats that is based on the 1971 population. ठीक है, so इसको हम देखते हैं कि किस तरह से क्या आंसर होता है, बिकॉज ओपी रावत जी की जो आंसर है, इवन सेकंड पर्सन उदय शंकर मिश्रा जी की, बिकॉज ही हिमसेल्फ was Chief Election Commissioner of India. So what exactly Election Commission thinks on this, that matters as well. Okay. So delimitation है क्या? It's a process of redrawing boundaries of Lok Sabha and State Assembly constituency based on recent census to ensure that each seat has almost equal number of voters. So होता क्या है, जैसे delimitation commission recent में जम्मू कश्मीर में हुआ था, फिर असम में भी हुआ. ठीक है, सो होता क्या है कि ओवर द टाइम, फॉर एग्जांपल 2011 की जो सेंसस है उसमें इंडिया की पॉपुलेशन सपोज 1.21 लाख करोड़ है. ठीक है, बट नेक्स्ट सेंसस जो अभी रिजल्ट उसका आएगा नेक्स्ट 1-2 इयर्स में, जो इनिशिएट हो चुका है, सो ऑफ कोर्स हो सकता है कि 1.4 बिलियन तो ऑलरेडी पॉपुलेशन हो चुकी है. सो अगर लेट अस टेक इट एज दिस फिगर एज as a final, let us say, result.
So 1.4 billion population है from 1.2 billion. So this 0.2 billion जो addition हुई है, so of course somewhere this 0.2 billion population can impact the representation figure in India as well. For example, एक जो MP है, let us say कि हमारे यहाँ पे suppose किसी स्टेट में 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था पहले, और आज क्या हो सकता है, पॉपुलेशन बढ़ने से हो सकता है कि ये लोग 12 लाख हो गए हैं, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं MP एक ही है बट पॉपुलेशन नंबर ऑफ पर सीट्स बढ़ गई है, तो इसलिए डिलिमिटेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये तो जस्ट स्टेट की बात कर रहे हैं. हो सकता है कि इंडिया में 545 लोकसभा की सीट्स हैं, एंड लेट अस से कि 5 आउट ऑफ 545 समवेयर कहीं ना कहीं अगर 245 सीट्स पे पॉपुलेशन इंक्रीमेंट देखने को मिला, तो ऑफ कोर्स वी नीड टू, और हमें जरूरी है कि हम डिलिमिटेशन करें, सो दैट कि हम नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बढ़ाएं. एंड ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो एक MP के बराबर जो बर्डन है हमें जिस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना है वो यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट द कंट्री. मींस हर स्टेट में एक MP 10 लाख पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करे, प्रोवाइडेड कि उस स्टेट में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है. फाइन, अगर ऐसा है तो ऑफ कोर्स उसके लिए एक्सेप्शंस नहीं है, बट एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है. इसीलिए सपोज अगर किसी स्टेट में 50 सीट्स, 50 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट लेट अस से यूपी में जैसे है 80 सीट्स लोकसभा के, एंड ओवर द टाइम पॉपुलेशन अगर पूरे इंडिया की बढ़ रही है, ऑफ कोर्स यूपी की भी बढ़ रही है, तो हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अब हमें ये 80 की जगह 90 सीट्स करनी पड़े, सो दैट कि हम जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिफॉर्म रखें. ठीक है, एंड ओवर द ट्रेंड जो चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है उसको भी अकाउंट में. ठीक है, सो इस तरह से डिलिमिटेशन की जरूरत पड़ती है, एंड इट बेसिकली चेंजेस द स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड दिस alongside Lok Sabha constituencies as well. ठीक है, the last delimitation exercise took place in 1976. India level पे बात कर रहे हैं, not just in the states, because states में तो अभी last year, I mean this year only, just last month even Assam related delimitation result है finally. So of course this is about the national level. When the current boundaries were drawn on the basis of 2001 census, the number of Lok Sabha and State Assembly seats remained frozen on the basis of 1971 census. ठीक है, in 2002 the constitution was amended to place a freeze on the exercise until the first census conducted after the year 2026. So 2026 के बाद जो first census conduct होगा, जो भी upcoming census conduct होगा, not this one but the next one, so तब तक के लिए freeze कर दिया गया है on the basis of 1971 census. कि 1971 की population जो इंडिया की थी उसके बेसिस पे सीट्स की डिवीजन की गई है, एंड वही आज भी चल रहा है, व्हिच इज ऑफ कोर्स नॉट, आई मीन यू से नॉट गुड, बिकॉज़ जो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसको ये काउंट कर लेगा. ठीक है, सो शुड डिलिमिटेशन बी डिलेड एनी फर्दर, ओपी रावत एंड उदय शंकर मिश्रा डिस्कस द क्वेश्चन इन कन्वर्सेशन. ठीक है, क्वेश्चन आंसर फ्रॉम माय. So first question is, Lok Sabha constituencies were delimited pan India, across India, based on the 1971 population last time. Why did we decide that we should wait until 2026 before the new population figures are taken into account? So इस क्वेश्चन है कि हम क्यों वेट करें 2026 तक, क्यों ना हम डिलिमिटेशन अभी करें, बिकॉज 1971 से अगर 2026 की बात करोगे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा चेंज हुई, बहुत ज़्यादा इंडिया की इंक्रीज हुई है. ठीक है, सो कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें इशू है, यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्लस नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत जी को क्या कहते हैं, आफ्टर द 1976 delimitation which was based on 1971 population data, a decision was taken to freeze delimitation or redistribution of seats to different states based on the decennial population data for 25 years. Right, decennial means 10 साल, decadal, for 25 years ये इसको freeze कर दिया गया. ठीक है, this was due to imbalances. क्यों किया गया ऐसा? Because of imbalance in population growth between the northern and the southern states. Of course, अगर आप देखोगे तो southern state की population over the time, for example केरला, कर्नाटक and all, stabilize हुई है. Population growth है वो काफी कम है because of even good number of welfare measures as well, especially in the matters of health and education. So अगर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं तो of course chances हैं population growth जो है कम होगी. So in 2002 the delimitation was done, but even after that it was felt that this issue of population persists, and until after the first census after 2026, means not in 2026 but until after first census
पोस्ट 2026 के बाद। सो अगर नेक्स्ट ईयर कोई सेंसस का रिजल्ट आ रहा है, ऑफ कोर्स 11 के बाद 21 में होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ कोविड कहीं ना कहीं डिले चल रहा है। सो अगर 23 में लेट अस से इनिशिएट हुई है सेंसस, तो नेक्स्ट जो सेंसस है वो लेट अस से समवेयर टू 2033, और अगर हम 10 रख के चले तो ऑफ कोर्स 2033 में होती है। सो उसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं पोस्ट 2026 जो फर्स्ट सेंसस हो। सो देयर विल बी नो लिमिटेशन, ठीक है। प्रोजेक्शन शो दैट द नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार हैव a senior growth rates of 12% to 15% of population, whereas in the southern states the senior growth rates range between 6% to 10%. So this is the variation in the population growth between southern states and northern states. Northern state की population growth rate है कहीं ना कहीं 5 से 15% की है रेंज में, एंड southern state की है वो 6 से 10% के बीच में है। So इस difference को of course because of this difference, this is one factor जिसकी वजह से सीट जो को फ्रीज कर दी गई 2026 में। From 2011 to 2021 there was no leveling. It is presumed that after 2026 this leveling will take place. Means after 2026 it is expected that this population leveling जो है उसको चेंज की जाएगी, सीट्स बढ़ाई जाएगी, ठीक है, डिलिमिटेशन की जाएगी। Next question is, in 2002 there was no redistribution of Lok Sabha seats across the state boundaries. The boundaries of Lok Sabha constituency were redrawn, but the total number of seats in particular state did not go up or down. तो 2002 में नो डाउट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री उसको रिड्रॉ किया गया, ठीक है। मींस कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें नंबर ऑफ लोग जो भी रह रहे हैं वो वोट करते हैं फॉर पर्टिकुलर वन सीट ऑफ लोकसभा लेटर से डिफाइंड एरिया ज्योग्राफिकल एरिया। सो उस ज्योग्राफिकल एरिया को लेटर से एरिया को बढ़ाया गया। सो मोर नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है लोग हैं वो उसमें आ गए, ठीक है, इंक्रीज होगी पॉपुलेशन पहले से, बट नंबर ऑफ टोटल जो सीट्स थी लोकसभा की वो नहीं बढ़ाई, वो एज इट इज रखा गया, ठीक है ना, कम की गई ना ज्यादा। So the current distribution of Lok Sabha seats is as per the delimitation of 1976. So क्या current delimitation of 1976 के अकॉर्डिंग है? इसमें फिर से CEC जो former CEC है, Chief Election Commissioner of India, he says yes. Also the number of seats is specified by Parliament, and whenever there was a state reorganization, it was specified in the State Reorganization Act 1956 itself. For instance, when Uttarakhand was formed out of course Uttar Pradesh, it was specified that instead of 22 assembly seats that it had in Uttar Pradesh, Uttarakhand would have a 70-seat assembly. So जो पार्ट उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड बना उसमें अकॉर्डिंगली 22 सीट्स ही होनी चाहिए थी, बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि 70 सीट की असेंबली बनाई गई। उत्तराखंड में आज जो असेंबली है दैट इज टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 70। So कहते हैं कि I feel that whenever the next delimitation is taken up, Parliament will decide what the total number of Lok Sabha seats and different legislative assembly seats will be. इसीलिए अगर आप देखोगे तो न्यू जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी, जो न्यू पार्लियामेंट बनी है, सो उसमें जो स्ट्रेंथ है वो कम से कम 800 के आसपास रखा गया है, सो दैट कि ओवर द टाइम जो चेंजिंग पॉपुलेशन डायनामिक्स है उस केस में अगर हमारे को लोकसभा की सीट्स बढ़ानी पड़ रही है 545 से हम ऊपर जा रहे हैं, 700 रेंज में जा रहे हैं, सो दैट कि उस बढ़ती हुई जो एमपीज के नंबर है उसको अकोमोडेट कर सके। इसलिए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसमें इतनी क्षमता है कि ओवर द इंक्रीज जो नंबर्स होंगे उसको भी अकोमोडेट किया जा सके, ठीक है। सो फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर को देखते हुए ध्यान रखते हुए बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द स्टेट्स विल बी डिसाइडेड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी व्हिच विल बी अपॉइंटेड अंडर डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बाय द प्रेसिडेंट। Parliament gives them direction for devising a formula for reallocations of seats. So of course, this delimitation commission actually takes the delimitation exercise, that is redrawing of state boundaries and constituencies, ठीक है, for both Lok Sabha and state elections, state assemblies, and therefore उसके बाद ही जो ओवरऑल हमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने की बढ़ेगी, ऑफ कोर्स क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, घटने का भी सवाल ही पैदा होता। सो ऑफ कोर्स इस तरह से बढ़ाई जाएगी सीट्स ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ delimitation commission. Next question is, so even while the basic requirement is that representation will have to be proportional to the population, बिल्कुल ठीक बात है कि जो representation है, ठीक है, वो population के proportionate होनी चाहिए, जैसे population बढ़ रही है वैसे representation भी बढ़नी चाहिए। One person, one vote, one value. Parliament has the leeway to fine-tune the principle in order to ensure that in some cases relatively fewer people will continue to elect a parliament member. फिर से CEC ये कहते हैं फॉर्मर CEC, yes, for instance in Tripura और मणिपुर
they gave 2 seats even though the population was not enough. Lakshadweep has 1 seat for just about 68,000 people. We are talking about Lok Sabha seats. Such exceptional arrangements can always be made by Parliament, but we have universal suffrage, that is one person one vote, right to vote. That principle cannot be obliterated outright. So इस principle को कहीं ना कहीं खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है? Universal suffrage, that is one person has one vote. But I told you initially exceptions हैं, कहीं पे population suppose not just अपने नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स हैं, कि population ही कम है, so अगर कम है तो वहाँ भी representation है, इस स्टेट में एक लोकसभा सीट है, कहीं पे 2 है, for example यहाँ example देते हैं त्रिपुरा and मणिपुर, they are smaller states even though they have been given 2 लोकसभा seats, ठीक है? Next is some calculations suggest that if Lok Sabha seats were to be redistributed according to the current distribution of the population, the northern states might have as many as 32 seats more, while the southern state might have up to 24 seats fewer. So based on the population dynamic, जैसे population northern states में बढ़ा है over the time and southern states में कम हुआ है, so इस वजह से जो seats हैं वो north में हमें north India में बढ़ती हुई देख सकती है और south में घटती हुई, ठीक है? ये क्वेश्चन है नेक्स्ट. That scenario cannot be significantly altered by parliamentary intervention, which might be able to deal with specific cases like isolated geographical areas or hilly areas. So कहते हैं कि हो सकता है कि इस चीज को डील ना कर पाए पार्लियामेंट, ठीक है? Categories of community, is that right? So again CC कहते हैं, former CC, Parliament can specify that no state will lose the number of seats that it currently has. So of course ऐसा हो सकता है कि northern states में चाहे बढ़ रही हो seats, but southern states में Parliament ऐसे specify कर सकते हैं कि कम नहीं होंगी, जितनी हो उतनी रहेंगी, ठीक है? अगर कम होने के चांस है तो भी, ठीक है? Now Professor Mishra, how question इनसे है Professor Mishra से that how do you see the regional variation in population trends? So regional variation आप कैसे देखते हो population trends में? So Mishra, जो Professor Mishra है कहते हैं this very question that we are trying to address in terms of delimitation I echoed when I was involved in the Finance Commission exercise of allocating population weightage on population. Earlier Finance Commission decision was based on the 1971 census, बिल्कुल ठीक बात है, but next जो 15th Finance Commission था उसके लिए जो terms of reference थे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप 2011 की जो सेंसस था उसको भी कंसीडर करो, बट उससे पहले जो ये फाइनेंस कमीशन थी वो 1971 की पॉपुलेशन सेंसस को कंसीडर करती थी, ठीक है? बट इन द मोस्ट रिसेंट एक्सरसाइज ऑफ द फाइनेंस कमीशन इट वाज मूव्ड टू 2011 सेंसस फिगर. द रीजनल वेरिएशंस इन पॉपुलेशन काउंट आर डेफिनेटली शोइंग अ डेमोग्राफिक डाइवर्जेंस. बिल्कुल ठीक बात है कि डेमोग्राफिक डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रही है अगर रीजनल बेसिस पे बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ है की, बिकॉज एग्जांपल नॉर्थ वर्सेस साउथ, नॉर्दर्न स्टेट में पॉपुलेशन बढ़ रही है बट जो सदर्न स्टेट्स है उसमें घट रही है, ठीक है? सो ऑफ कोर्स डाइवर्जेंस तो है ही है. इवन टुडे वी आर वायलेटिंग द वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू प्रिंसिपल. सो ही इज सेइंग समवेयर वी आर वायलेटिंग दिस प्रिंसिपल. Parliament has this leeway to say that nowhere can seats come down even if the number of seats increase overall. The ratio between parliamentary representation of the northern states and southern states might widen. बिल्कुल अगर आप नॉर्थ की सीट्स बढ़ा दो और साउथ की उतने पे ही रखो चाहे कम ना करो, फिर भी गल्फ तो बढ़ गया ना, तो कहीं ना कहीं जो गैप पहले था उससे और बढ़ गया. एक को आपने कांस्टेंट रखा है को आप बढ़ाई जा रहे हो तो ऑफ कोर्स ये गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है? So Parliament must evolve a certain normative proportionality based on population. This proportionality principle फॉलो करना पड़ेगा Parliament को कि जैसे जैसे जिस proportion में population कम ज़्यादा हो रहा है उसी proportion में seats कम ज़्यादा करें, ठीक है? From which a deviation can always be considered. We are going to do the delimitation exercise, but can't we have a fixed proportionality in the first place and then allow a deviation depending on specific circumstances? ये कहते हैं क्यों ना हम ऐसा करें कि फिक्स सीट्स कर दें और फिर हम उसको पॉपुलेशन को अकाउंट में लेते हुए सीट्स को जहां पे जरूरत है बढ़ाने की बढ़ाएं और कम करने की जरूरत है कम करें, बट विद द फिक्स प्रोपोर्शन. If the quantum increases and if we keep the proportionality constant, the game will definitely become unequal. So अगर quantum number of seats बढ़ाते जा रहे हैं हम and we keep the proportionality constant, ठीक है? एक फिक्स हम constant क्राइटेरिया यूज करते हैं कि हाँ इतनी सीट्स तो नहीं है प्लस इतने के बाद लेटर से 100 सीट्स फिक्स कर दी, इसके बाद अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है नॉर्थ साइड में तो इसको 100 प्लस ले जाएंगे, साउथ में अगर कम हो रही तो इसको 100 माइनस करेंगे, ठीक है? सो इस तरह से द गेम विल डेफिनेटली बिकम अनइक्वल. इस तरह से गेम अनइक्वल हो रहा है.
एक तो आपने कांस्टेंट रखा, दूसरे को बढ़ा रहे हो तो भी अनइक्वल है, दूसरी केस में अगर आप एक को बढ़ा रहे हो दूसरे को कम कर रहे हो, ऑफ कोर्स अगेन इट्स अनइक्वल. If we think of a solution to this particular problem, we cannot be looking at count alone. So ये कहते हैं कि अगर हम solution की बात करें तो सिर्फ हमें number of seats पे ध्यान ना देने की बजाय there is a judgment to be applied as to what count of proportionality should be maintained. So हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि what count of proportionality should be maintained. कि proportionality में proportion के sense में हमें कितने number of seats रखनी चाहिए, ठीक है? There should definitely be a minimum of normative of the count also, कि कुछ minimum seats तो रखनी पड़ेगी. For example जैसे मैंने 100 कहा तो आपको एक figure तो set करना पड़ेगा, फिर उसी figure के with respect to that figure आप add और subtract करोगे. When it comes to a representation, it is not the count, not the numbers, but the characteristics of representation which is more important. ठीक है? Characteristics rather कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं, किस डायनामिक्स, कास्ट डायनामिक्स क्या है, क्लास क्या है, there are lots of things apart from that is the number. So there are numbers that are larger and numbers that are smaller. Can we in the process be missing the voices of the marginal communities? ठीक है, क्या हम ट्राई कर सपोज marginal disabled people, marginalized communities जो है, women, even women considered to be a marginal one. So for ST है, STs हैं, SCs हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन, क्या हम उनकी वॉइसेस को मिस कर सकते हैं? No, not at all. For instance, the tribal people, the elderly. So standard proportionality norm has to be negotiated in such a manner that we do not miss out on the marginal voices when it comes to representation in terms of allocation of seats. Representation is not merely per capita representation. Per capita means with respect to population especially, it involves a greater accommodation of diverse characteristics. And given India's diversity and unusual concentration of certain groups in the population, this is important to take note of. So he is saying that more focus should be devoted to the diverse nature of India's constituencies rather than the quantum or the number of seats. Okay, that is why we have a whole set of group rights that are part of India's organizing principles, but the starting point is to divide the total population by the total number of constituencies we have to form a representative government. So this is a question being put before the former CEC. So what he says, actually going by the book, it is about head count only, head count ratio only. There can be specific arrangements to give representation to particular areas for those groups to be visible. ठीक है, so हो सकता है किसी marginalized areas को या marginalized group है उनको special representation की जरूरत पड़े, but those groups should be visible. These arrangements should be political because this is a complicated matter. It will be decided by politics and parliament. So they will bargain to come up with some formula, but they will never try to bring in the colonial concept of different categories of voters. ठीक है? So of course ये कहते हैं कि solution जो है that lies in politics and parliament, and the parties would need to bargain. ठीक है? But ultimately they will never try to bring in the colonial concept of different categories of voters. Britishers के टाइम में क्या था कि different categories of voters थे, Muslim, Hindu, even ki Christian, different based on this religious denomination as well, different votes और category बनाई गई थी, male की, female की and all. So इस तरह से कहीं ना कहीं ultimately communalism के base पे वो demarcation थी, but even की income was one of the basics, जिसके base पे income and property लोगों को right to vote दी गई initially during Britishers time, but this should not be followed now, of course, because we are a pretty country now. So will that flexibility be wide enough to accommodate concerns that the southern states will be overwhelmed by the rising political weightage of the northern states? So कहते हैं कि क्या ये flexibility wide enough होगी to accommodate the concerns of southern states? ठीक है? Now again former CC says, I feel that we are being blinkered in this issue, whereas parliament and the political process will see it in totality. What happens if some areas get more seats in parliament? What is the fear? Those are important issues to settle. I find that whether it is the south or the north, voters are mature and display in the same polling booths two different preferences, one for the state and another for the center. So of course whenever we go to vote and go for voting, of course we have two different options, two different choices, two different perceptions.
you might be choosing one different party or one different person for the center, and of course you will be choosing different person for the representative for the state. ठीक है? Undoubtedly he is saying that of course again the solution lies in politics in parliament, and voters are mature enough to see this thing. ठीक है? इसको चुनना है कैसे? We should have faith in people. They will definitely come out of it when the issue comes up. Next question is, and last question is related to Professor Mishra. What impact do you see migration having on electoral politics? Now migration की बात करते हैं. For instance, migrants from Bihar and Uttar Pradesh have become significant political constituency in Delhi and Mumbai. Professor Mishra कहते हैं patterns that we examined indicate that mobility has increased in the last decade or so. There are 2 to 3 very distinct flows of migration happening from the east to the south. Of course, eastern states से लोग southern states में migrate कर रहे हैं, and from the north to the west, northern states से west, Mumbai, Gujarat side. Migrants from the east are replacing the workforce in southern states. In political terms, migrants agency is going to play a very significant role in outcomes. Already we see candidates raising issues and concern of migrants from instance in Kerala. So of course Kerala में आप देख सकते हो, या तमिलनाडु में भी कुछ issues होते रहती हैं related to migrants. So of course migration is going to play an important role in this political dynamics. Fine. And final representation. So again a very good piece of you can say this in the questions format article, which gives us idea about this delimitation commission in number 6 states. Okay, next important is related to Kutch state or the Kutch this bridge. ठीक है? International relation और especially places in news के हिसाब से आपके लिए आर्टिकल important है, काफी important है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, especially इससे important क्या है? तो important जो है सबसे पहले most important चीज जो है that is locations. This location is very important because Ukraine and Russia का conflict में almost 1 year already हो चुका है, almost 5 years about to complete. So इसलिए जरूरी हो जाता है कि इन areas को हम ध्यान से देखें अपने atlas पे वर्ल्ड मैप पे. ठीक है? सबसे पहले first and foremost important point here is Black Sea. आपको पता होना चाहिए Black Sea कहाँ पे है. So all this area is of Black Sea. ठीक है? जो भी एरिया है बॉडीज आपको देखने को मिल रही है. ठीक है? So this complete area is Black Sea. ठीक है? अब सी के अंदर कुछ स्ट्रेट्स होती हैं एंड कुछ दिस ब्रिज भी बने हुए हैं. सो फर्स्टली हियर इज योर कर्च स्ट्रेट. सो इसीलिए इसका नाम भी कर्च ब्रिज है बिकॉज़ ये बना ही कर्च स्ट्रेट पे. ये दो एरियाज कर्च इन क्रीमिया बेसिकली बीइंग कनेक्टेड टू दिस तमान एरिया यू कैन सी इन रशिया. सो बेसिकली कर्च ब्रिज कनेक्ट्स टू एरियाज ऑफ क्रीमिया एंड रशिया. Actually, Crimea is under the control of Russia only. Russia, this annexed Crimea in the year 2014 itself. ठीक है? So ये ध्यान रखना. So ये bridge बहुत ज़्यादा important है रशिया के लिए because it connects Russia with the mainland of Crimea. ठीक है? And since it is in this area of Kerch Strait, so that's why it is referred to as a Kerch Bridge. ठीक है? उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि तमान बे कहाँ पे है. So तमान बे of course it is in Black Sea only. And Taman Bay is here. यहाँ पे तमान है place, इसलिए तमान Bay. For example, Bay of Bengal, Arabian Sea, Bay of Bengal especially. So of course, Black Sea आप देख रहे हो ये, यूक्रेन नॉर्थ में पड़ता है, रशिया ईस्ट साइड में. ठीक है? So ये ध्यान रखना आपने. Kerch Strait Bridge is a road bridge temporarily closed. Russia says that attack carried out by the 2 Ukrainian underwater drones actually dismantle this bridge. ठीक है? क्रीमिया यहाँ पे ये रशिया के कंट्रोल में है. उसके बाद आपके पास Sea of Azov है यहाँ पे. Again, this is important. This location is very important, especially Black Sea as a whole is important. Black Sea कल भी हमने देखा Black Sea Green Initiative. So of course इसलिए Black Sea की जो locations है around जो स्ट्रेट एंड सीज हैं और बे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से. ठीक है? सो आपने मैप लिए वर्ल्ड मैप पे लोकेट करना ये पर्टिकुलर लोकेशंस. फाइन. सो थोड़ी अगर हम डिटेलिंग देखें कर्च स्ट्रेट ब्रिज की तो अराउंड लेंथ 90 किलोमीटर है. ओपन इन 2018 बिकॉज़ 2014 में कैप्चर दिस कनेक्ट्स किया था क्रीमिया को रशिया ने. 2014 में ये ब्रिज बनकर तैयार हुई थी. रोड ब्रिज 4 लेन हाईवे यूज्ड बाय अप टू 40,000 व्हीकल्स
ट्रेवल्स डेली, ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। दिस इज हाउ दिस ब्रिज इज, रेल ब्रिज भी है साथ में, फाइन, ड्यूअल रेलवे कैन हैंडल 94 ट्रेन्स पर डे, ठीक है। दिस इज वाइटल फॉर मिलिट्री सप्लाई लाइन, इसलिए इशू है क्योंकि इस जो ब्रिज को हटाया गया है, ठीक है, सो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द रशियन मिलिट्री एक्चुअली ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द सदर्न यूक्रेन, ठीक है, सो सप्लाई कहीं ना कहीं कट जाएगी यहाँ से, तो इसलिए हो सकता है यूक्रेन ने किया हो, बिकॉज़ यू नो कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है। सो द कर्च ब्रिज which links the Russian mainland to the Crimean Peninsula in the Black Sea came under attack last week, killing 2 people. This is the news related to this Crimean bridge explosion. So quickly, what happened to the Kerch bridge? According to Russian authorities, one of the sections of the bridge was blown up, killing 2 people and injuring a child. ठीक है? So this is according to Russian authorities, and they have claimed or rather labeled Russia, this Ukraine, to be behind this blowing off of this Kerch bridge. So why is this bridge so important? The bridge is important for Russia for symbolic, administrative and operational reasons. When Russia swiftly moved to annex Crimea in 2014, after a pro-Russian elected government in Kyiv failed amid West-backed anti-regime protests. ठीक है? So pro-Russian elected government ही कीव में, कीव is the capital of Ukraine, so ये गिर गई थी because क्रीमिया को कैप्चर कर लिया था, and ये सरकार जो गिरी कीव में और रशिया this यूक्रेन में, that was because due to the reasons of Western nations West-backed anti-regime protests. There was no direct connectivity between the Russian mainland and the Crimea, so Mr. Putin immediately ordered the construction of the bridge, but the bridge remained a weak link as Ukraine grew in military strength backed by the West in subsequent years. When Mr. Putin ordered a full-scale war on February 24, 2022. So remember, this Ukraine-Russia conflict started on February 24, 2022. What the Russians still calls a special military operation. So Russian जो है वो इसको war नहीं कहते, conflict नहीं कहते, इसको special military operation कहते हैं, क्योंकि see how the West plays the game. सबसे पहले सीट जो है वो किसने शो की? Of course वेस्ट ने, बिकॉज वेस्ट ने बैक किया प्रो रशियन गवर्नमेंट थी ऑलरेडी यूक्रेन में एस्टैब्लिश, उसको हटाने में वेस्ट बैक एंटी रेजिम प्रोटेस्ट करवाई गई वहां पे यूक्रेन में, एंड देयरफॉर उसी टाइम से इस तरह की चीजें जो है वन फॉर वन स्टार्ट हो गई, ठीक है। वन ऑफ द मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स वाज टू सिक्योर अ लैंड bridge from mainland Russia to Crimea. Russia now has a land bridge extending from northeastern Ukraine through the Donbas and Kherson to Crimea. But it is not far from the front line and well within the range of Ukrainian fire. Fine? Because this is the area, adjacent to northeastern Ukraine. Fine? Crimea region. तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हो सकता है यूक्रेन इसको उड़ा दिया हो. So the Kerch bridge remains a critical logistical supply link for the Russian troops in the south, especially South Ukraine. Last year, Ukraine targeted the Kerch bridge when it was planning an offensive to retake Kherson. Remember, Kherson and Donbas जो है, these are the areas of basically Ukraine itself, but somewhere pro-Russian people or let us say not independent government but pro-Russian movement is going on in these two regions. ठीक है? The plan was to disrupt the supplies when Ukrainian attacked Russian troops on the western bank of the Dnieper River, important river of this Europe. The Russian troops withdrew from the Kherson city in November to the eastern bank of the river. So this is the whole story going on. Now one of the key goals of the counter-offensive by Ukraine, which began in early June, was to destroy Mr. Putin's land bridge, according to the Western officials. ठीक है? क्योंकि जब आप सप्लाई लिंक ही कट कर दोगे, रशियन जो सोल्जर्स है, आर्मी जो है वो नहीं ट्रेवल कर पाएगी टुवर्ड्स द सदर्न पार्ट, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ Donbas and Kherson. So of course, somewhere Ukraine would feel protected. Fine. So this might be the strategy of the Western nation. Fine. This is how they play the dirty game. And of course, the victim here is Ukraine. Ukrainian troops want to make deep thrust into the Russian territories of the southeast, reaching the Sea of Azov coast, which would leave Crimea further vulnerable to future Ukrainian attacks. So, जो Ukrainian troops की focus है, that is to reach the Sea of Azov, therefore make the Crimean, Crimea further vulnerable to future Ukrainian attacks. So this is the strategy basically.
leaving the Kerch Bridge the only link between the mainland Russia and the peninsula, Crimean Peninsula. Ukraine also wants to disrupt Russian supplies to southern Ukraine, which is the focal area of the counter-offensive. Offensive and counter-offensive. Where does Ukraine counter-offensive stand today? Ukraine launched the counter-offensive with advanced weapons supplied by the West, led by US of course. Over the past several months, Mr. Zelensky, the president of Vladimir Zelensky, president of Ukraine, has consistently campaigned for more advanced weapons from the West to fight the Russians. The US and its European allies have supplied armored vehicles. For example, UK, France, then Germany, then US. These are the countries with major countries supplying weapons to Ukraine to fight Russia in this offensive. The US and its European allies have supplied armored vehicles, long-range rockets, cruise missiles, main battle tanks, and missile defense systems, missile artillery shells, and all. So these are being provided by this. The US alone has announced 42 aid packages for Ukraine since the Russian invasion began. So you can see how US is being involved in this game. Okay? In the latest package, the US announced its decision to send cluster munitions, which have been banned by over 100 countries for the indiscriminate arms they cause to civilians. Ukraine. Cluster bombs or munitions you might be aware of. That's why we should put in a warrant that we do have cluster bombs. Allies wanted Ukraine to make swift battlefield gains against Russia in the counter-offensive to put pressure on Mr. Putin. But after 6 weeks of fighting, Ukraine hasn't taken any breakthrough victory. Kyiv says its troops have recaptured some 210 square kilometers of territory since the counter-offensive began. So this is the whole story going on this much. According to the New York Times report, which cites American and European officials, Ukraine lost 20% of weaponry it sent to the battlefield, including the supply to manage battle tanks. The battle lines moved substantially away twice this year. First in January when the Russians took Soledar, and then in May when the Russians took Bakhmut. The Russians have built huge fortifications along with over 1,000 km long front line, which mines and tank traps which seem to have slowed down the march. So these are basically the story about the Russian, what Russia has said and done. So Russia has already built around fortification in the area of this around 1,000 kilometers. Fine. So of course Russia somewhere mightier in this game, but since Ukraine being supported by Western nations, so of course that's why Ukraine is in the game till now. Fine, and even taking this mini counter-offensive against Russia. This puts Ukraine under pressure. In the recently concluded NATO summit in Vilnius, Lithuania, Ukraine got guarantees from its Western allies for more weapons and training. Kyiv also said the major thrust of the counter-offensive was yet to begin. Then came the attack on the Kerch Bridge. Okay? So this is the whole thing going on between Russia and Ukraine. This Kerch Bridge, the location, the Black Sea, this is very, very important from the example topic. Please do locate these areas on your atlas or world map. Okay, so then Ahmedabad court rejects Sikhalwad discharge plea. We have already discussed. Law will act with full might of guilty, but with respect to Manipur, this is what our Prime Minister and this don't misuse facilities, CGI tells judges. So this is a good thing. The captain is somewhere suggesting the team players to not miss the facilities provided to you, not to use their protocol facilities in a manner that is liable to cause inconvenience to others or to bring public criticism of the judiciary. Fine. And he was referring to a recent incident where a High Court officer sought an explanation from railway personnel about the pantry staffers not serving a judge. Protocol facilities which are made available to judges should not be utilized to assert a claim to privilege, CJI cautioned. Of course, it happens when you have power, you exercise that in absolute manner as well. It should be we should avoid that. Okay, SC bench, Supreme Court, going to hear defamation case of Rahul Gandhi today. So finally, when he didn't get any kind of, this stay on the order of this, with respect to this defamation case, Mr. Gandhi has approached, we have discussed in this back, related to this on this page itself. ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि गुजरात हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया था स्टे लगाने से. सो फाइनली गांधी पहुंच गए हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में अपील किया तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी. फर्स्ट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वाज अ वॉश आउट कोर्स
अभी सेशन चल रहे हैं तो प्लीज संस्कृत भी देखा हम लोग थोड़ा टाइम, ठीक है? देखो कि कैसे प्रोसीडिंग्स चलती होती है संसद में. You will get to know more about your representatives, ठीक है? Yesterday, Supreme Court ने आज क्या सेंट्रल कोर्ट to transfer cheetahs to another location from दोनों नेशनल पार्क in मध्य प्रदेश, because वहाँ पे काफी डेथ्स देखने को मिल रही है, ठीक है? Told the Indian government that the deaths of 40% of the 20 cheetahs brought from South Africa and Namibia to the Kruger National Park within a year does not present a good picture. So therefore, prefer to relocate them to somewhere else, ठीक है? 40% of the cheetahs already dead, which were brought from South Africa and Namibia. Fresh consultation on UCC was initiated considering its importance. ठीक है? Center bans export of non-basmati white rice to control price rise in India. Now this is the world news. Russia bombers Ukraine ports for the third night. Putin opted out not to jeopardize summit. हमने देखा था कल कि Mr. Putin is not going to attend the BRICS summit in the South Africa. Swedish embassy in Iraq attacked and envoy expelled. ठीक है? So not that important, but आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है. China doesn't want a trade war with US. This is being said by Chinese representative. ठीक है? She has old friend Kissinger in Beijing meeting talks of contribution to China. Mr. Kissinger, former US Secretary of State, a veteran diplomat, 100-year-old diplomat, see, central to the US establishing ties with Communist China in the 1970s. So he visited China yesterday, and of course he shares good moment with Xi Jinping, President of China. So Mr. Kissinger is a well-known name in the field of diplomacy and okay. In business page, not much important from this. US indicator points to recession starting soon related to US economy. Okay. Finally, we are landed on the sports page of the today's Hindu, and therefore we are concluding our live news analysis. Fine, we have discussed whatever relevant editorials, articles were there. Apart, also, जो important आपके miscellaneous facts and figures थे related to your preliminary exam. So, अगर किसी को problem है, anything whatever we discussed related to that, please put the same in the comment section. Until then, take care, keep revising, fine, and stay tuned for tomorrow's Hindu analysis. Thank you.